Plateau is flanked by Aravallis on the northwest and the Western Ghats in the east, and the dissected Eastern Ghats in the east. This plateau ranges in an elevation from meters in the northern side to 1000 meters to south. So that the Peninsular Plateau is flanked by Aravallis in the northwest. Aravallis देखिए, अगर हार्ड डेजर्ट से देखें तो Aravallis आपको क्या आते हैं? साउथ ईस्ट में आते हैं. अगर पेनिनसुला से देखें तो आपको किधर आते हैं? North west. Are dissected in the Eastern Ghats in the east. So then the plateau ranges in an elevation of 100 meters in the north to 1000 meters in the south. ठीक है. कौन से रिवर जा रहे हैं इसमें से? पेनिनसुला प्लेटो में से? What are the different rivers which are flowing? Many rift valleys such as MN, Narmada, कल याद करे थे? GDP. Yes, sir. MN, GD, GDP. GDT. नर्मदा, Tapi. Sorry. महानदी, Mahanadi, नर्मदा, Godavari, गोदावरी एंड तापी. इकोनॉमी में तापी याद रख सकते हैं. इकोनॉमी क्या था? जीडीपी. नीचे तापी. तो महानदी, नर्मदा, गोदावरी, दामोदर एंड तापी. These are the because of this ये वैली क्रिएट हो गए और पानी आता है. उसका पूछा पड़ी. Please read. The Peninsular Plateau, the Deccan Trap, is famous for black soil. The Peninsular Plateau is rich in valuable minerals such as manganese, iron, mica, From there, manganese, oxide, gold, and copper. oxide, gold and copper. इसके बाद divisions of the peninsula. जैसा कि हम कल पढ़े थे, तो we have to continue from here. Today, inshallah, we will complete this completely. Next. What are the divisions of the Peninsular Plateau? The Central Highlands. There are two divisions. One is the Central Highlands and one is the Deccan Plateau. Central Highlands कितना है? मालवा Plateau, बुंदेलखंड Plateau, बादलखंड and छोटा नागपुर Plateau. Deccan Plateau में क्या क्या आता? Deccan Trap आता, Western Ghats आता, Eastern Ghats आता और North East extension. गारो, खासिया, जैंतिया. उसके बाद में you have Central Highlands. Central Highlands पढ़िए. What is The Central northern Highlands? part of the peninsula, north of the Vindhyas, is known as the Central Highlands. The Central Highlands are bounded by Aravalli Range on the northwest, Ganga Plains on the north, and Vindhya Range on the south. The Central Highlands are wider in the west but narrow in the east. The Wider flow in of the the west, wider in the west, narrow in the east. east. The flow of the rivers draining this Chambal, region, namely the Chambal, Sindh, and the Betwa and the Kin, is from southwest to northeast, thus indicating the slope. southwest माने southwest क्या है? ऐसा जाके ऐसा जा. अगर आप देखें मैप, if you see the map, ये कौन से रिवर्स है? ये साउथ वेस्ट है ना, चंबल. ऐसा स्टार्ट होके नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं. ठीक है, इससे कनेक्ट हो रहे हैं. ऐसा नहीं आ रहे. इसका फ्लो कैसा है? ऐसा है. प्लीज रिमेंबर, फ्लो ऐसा नहीं है. द फ्लो इज ऐसा है. साउथ वेस्ट ऐसा जा रहा है. नेक्स्ट. Sure. नेक्स्ट. मालवा प्लेटो पढ़िए. मालवा प्लेटो
The Malwa Plateau forms western part of the Central Highlands and comprises the entire area between the Aravalli Range in the northwest and the Vindhya Range in the south. So Aravalli range in northwest and the Vindhya range in the south. ये आपको मालवा प्लेटू दिख रहा है इधर, आपका पिक्चर भी है मालवा प्लेटू का इधर, इस द मालवा प्लेटू. तो मालवा प्लेटू के बारे में पढ़ो. An area is about 81,767 square kilometer, and average height is 500 meters. The landscapes slope downward towards the north and the northeast. The Chambal River and its tributaries drain most of the Malwa Plateau. Important cities Indore, Bhopal, Ujjain, Sagar, Ratlam, Devas, etc. So Indore, Bhopal, Ujjain, Sagar, Ratlam and Devas, etc. इसकी हाइट कितनी है? 500 मीटर. प्लीज रिमेंबर, ये 500 मीटर है. जब बागेलखंड को आते 500 से 1000 पे चले आता हूँ. The landscape क्या है? What is the landscape? Slope downwards towards the north and the northeast. माने ऐसा है. It is going like this. ठीक है. चंबल कौन से रिवर फ्लो हो रही है इसमें से? मालवा प्लेटू से Chambal rivers and its tributaries. Next, बुंदेलखंड पढ़िए. Bundelkhand, located to the east of the Malwa Plateau, the Bundelkhand is spread over southern Uttar Pradesh and northern Madhya Pradesh. Total geographical area is around 70,000 square kilometers. So, located in the east of Malwa Plateau. ये मालवा है, इसका ईस्ट में. बुंदेलखंड किधर है? सदर्न उत्तर प्रदेश है, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश. Madhya Pradesh. जब बुंदेलखंड, ये याद रखिए. ऊपर उत्तर प्रदेश, बाजू नीचे Madhya Pradesh. तो बाद में टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है कितना? 70,000 square kilometers. 70,000 स्क्वायर Kilometer. इसके बाद पढ़ो. The Bundelkhand, the northern part of the Bundelkhand, almost entirely in UP, is a flat plain. The center and the southern part of the Bundelkhand is covered by uplands and hills. All major rivers, Ken and Batwa of the region, flow from south to north, emptying into the Yamuna. Important cities Kanpur, Allahabad, Jhansi, etc. एक्सेट्रा. उसके बाद में इलाहाबाद का नया नाम पढ़ जाओ. प्रयागराज. पुराना नाम, नया नाम क्या है? प्रयागराज. पुराना नाम प्रयागराजा. प्रयागराजा. बागेलखंड पढ़िए. The Bhagalgand, located to the east of the Bundelkhand Plateau, the Bhagalgand is a region of central India in northeastern Madhya Pradesh and adjacent southern part of Uttar Pradesh. The total area is 14,323 square meters. The total square area is 14,323 square meters. ये बागेलखंड है. बागेलखंड is the region of central India in northeastern Madhya Pradesh and adjacent southern part of Uttar Pradesh. बुंदेलखंड क्या था? Madhya Pradesh. southern part of साउथ उत्तर प्रदेश का साउथ Uttar Pradesh and northern मध्य प्रदेश. बागेलखंड क्या है? Madhya Pradesh. नॉर्थ ईस्टर्न मध्य प्रदेश एंड द सदर्न पार्ट ऑफ एडजेसेंट सदर्न पार्ट ऑफ बाजू हटे हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट बागेलखंड और पढ़िए. Bhagalgand, the rivers Son, the Maikal Ranges and the Chhattisgarh region surround the Bhagalgand Plateau, located in eastern Madhya Pradesh. Its height ranges from 550 to 1,033 meters. Stones of the Jurassic age, about 80 million years ago, can be found in this plateau. Most of the coal deposits of Madhya Pradesh are found in this area. It houses tribals, dense forest, and many wild animals. The Kanha National Park is located in this area. Important cities Shadol, Umaria, Ambikapur, etc. क्या है? Because the dense कल इधर तक पढ़े थे. इस बार कंटिन्यू करता था. The river Son, Maikal ranges and the Chhattisgarh region surround the Bagelkhand Plateau. Located in the मध्य प्रदेश. कितना हाइट है इसका? 550 से लेके 1000
क्या बोले 33 meters. 33 1033 मीटर। उसका में क्या है, स्टोन्स कौन से एज के मिलते इधर? Jurassic age. पहला एज क्या है जो पूरा पैंजिया था उसका, वो एज को क्या बोलते हैं? When it was complete Pangea, that age was known as what? Pangea first कर Pangea। उसके बाद Pangea सेकंड एज क्या है? Pangea के बाद कौन सा एज आया? Pangea के बाद कौन सा एज आया? Triassic। यूरेशिया हाँ यूरेशिया बना Triassic। उसके बाद में Jurassic। Jurassic. उसके बाद में Cretaceous Cretaceous। Cretaceous. तो Permian, Present. Triassic, Jurassic and Cretaceous माने 145 मिलियन ईयर से, माने 14.5 करोड़ साल पहले। ठीक है। नेक्स्ट, बागेलखंड में ये मिलता है। In the Bagelkhand we found the Jurassic age rocks. Jurassic 80 million years ago can found in this plateau. Most of the coal deposits किधर है? Most of the coal deposits are in मध्य प्रदेश। ट्राइबल्स कौन से रहते हैं इसमें? Dense for tribe. It houses dense forests and many wild animals. और कौन सा नेशनल पार्क है इधर? Kanha Kanha National National Park. Park. कान्हा। कान्हा किसको बोल रहे हैं? Who is कान्हा? Who is कान्हा? कृष्णा Krishna. कृष्णा। Krishna. समझे? So it is all mythologically connected. कान्हा, कृष्णा, ठीक है? Next. Important cities क्या है? What are the important cities? Shadol, Umaria, Ambikapur. Shadol, Umaria, अंबिकापुर etc. अंबिकापुर कौन सा ब्रांड है? अंबिका कौन सा ब्रांड है फेमस? बड़ा फेमस ब्रांड ऑफ अंबिका। अगरबत्ती का अंबिका है। अगरबत्ती लाए, अगरबत्ती कभी? ऐसा अंबिका अगरबत्ती। Next, now we have to see from here. Please read. Chota Nagpur Plateau, very important. The Chota Nagpur Plateau. The Chota Nagpur Plateau is a plateau in eastern India, which covers much of Jharkhand state, as well as adjacent part of Orissa, West Bengal, Bihar, and Chhattisgarh. So कौन सा है? Chota Nagpur Plateau is plateau in eastern India. Eastern India. Eastern India, which covers much of Jharkhand state as well as Orissa, West Bengal, Bihar and Chhattisgarh. छोटा नागपुर प्लेटो। इसमें क्या है, आपको वाइल्ड लाइफ ज्यादा मिलते हैं और यू हैव द वाटरफॉल्स आल्सो। नेक्स्ट पढ़िए। The Chota Nagpur Plateau, the Indo-Gangetic Plain, lies to the north and east of the plateau, and the basin of the Mahanadi River lies to the south. The total area is approximately 65,000 square kilometers. Its height ranges from 1,100 meters to 300 meters. The important rivers Damodar, Son, Bokaru, Subharna Rakha, etc. सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा। उसके बाद में Chota Nagpur Plateau consists of 3 steps: Pat region, Ranchi and Hazaribagh Plateau, and Manham and Singham region. Chota Nagpur Plateau is a storehouse of minerals like mica, bauxite, copper, limestone, iron ore, and coal. Important cities: Jharia, Raniganj, Bokaru, Ramgarh, Karanpura, Jamshedpur, Asansol, Durhapur, Bardhaman, Ranchi, etc. so छोटा नागपुर प्लेटो consists of 3 steps.
Ghats region, Ranchi and Hazaribagh Plateau, and Manbhum and Singhbum region. Choटा Nagpur Plateau is a store of minerals like mica, bauxite, copper, limestone, iron ore, and coal. What are the important cities? Jharia, Raniganj, Bokaro, Ramgarh, Karanpura, Jamshedpur, Asansol, Durgapur, Bardapur, Ranchi, etc. Ranchi is the capital of Jharkhand. Jharkhand. Now this is the Chota Nagpur Plateau. Please read the Deccan Plateau. Southern part of the peninsula. The Deccan Plateau, the southern part of the peninsula, south of the Vindhyas, is known as the Deccan Plateau. Is known as the Deccan Plateau. माने विंध्यास के नीचे जो भी है उसको बोलते हैं Deccan Plateau. उसके बाद में boundaries of the Deccan Plateau. The Deccan Plateau is bound by the Western Ghats on the west, the Eastern Ghats on the east, Vindhya Range on the north. Indian is on the north. Deccan Plateau फिर पड़ी. The Deccan Plateau is a large triangular plateau in India, covering up the majority of the southern part of the country. Southern part of the country. तो हमने अगर आप ये देखें, to see this in detail, ये क्या है? हिमालय से इसके बाद में this part is the Deccan Plateau. This is the Peninsular Plateau और Deccan Traps. Deccan Trap कितना है? Why it is called as Deccan Trap? इधर आपको क्या बोलते हैं? Black soil बहुत जबरदस्त मिलती है और इसका पार्ट पूरा अगर आप पूरा गौर से देखिए, this is nothing but पूरा geography है. इतना डिटेल में जाने की अपनी जरूरत नहीं है. But we have to understand that this is known as Deccan Trap. Here is a reunion hot spot. It is known as Deccan Trap में एक reunion hot spot है. ठीक है, ये याद रखिए. और ये क्या है? मडागास्कर. मडागास्कर भी अपना हिस्सा था. ये जो चीना है, ये दिख रहा आपको? ये और ये अपना हिस्सा था, वो टूट के अलग होके चले गए. क्लियर? तो प्लीज रिवाइज दिस. इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. क्या याद रखिए? डेक्कन ट्रैप. इसमें डेक्कन प्लेटो पढ़िए. The Deccan Plateau is made up of basalt and granite rocks, having a region of highlands with typically vast stretches of flat areas on top like a table known as tabletop. It's like a table top. The Deccan Plateau is made up of basalt. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Deccan Plateau is made up of basalt. एक तो दो तरीके के रहते हैं. एक तो igneous रहता है, एक basalt रहता है. And granite rocks having a region of highlands. माने highland माने ऊंची जमीन with typically vast stretches, flat areas on top like a table. Known as table top. एकदम जमीन क्या है? ऊपर उठे भी, ऊपर क्या है? एकदम फ्लैट और कभी राउंड शेप में रहते हैं और ये फ्लैट रहता है लाइक टेबल टॉप. समझे? नेक्स्ट, द टर्म ट्रैप इज व्हाई ट्रैप इज यूज्ड. प्लीज रीड. The term trap used in geology for such rock formation is derived from the Dutch word for straits, referring to the step-like hills forming the landscape of the region. Maharashtra, parts of Gujarat and Madhya Pradesh, black soils. So the term trap is used in a geology for the such rock formation is derived from the Dutch word. जो जमीन बनती, जो पत्थर बनता, for states, referring to the step-like formation. अगर ये देखिए आप, ये कैसा दिख रहा है आपको? एक के ऊपर एक बनने जैसा दिख रहा? Yes, sir. एक ऊपर एक बन रहा है, इसको बोलते हैं ट्रैप. Highlands typically vast. Dutch word. ये क्या है? ट्रैप कहाँ से आया वर्ड? Dutch word से इस्तेमाल हो रहा. Rock formation for states, referring to step-like hills. जो ऊपर उठी हुई जमीन है, ऊपर नीचे दिखता रहता है, इसको बोलते हैं ट्रैप. कहाँ दिखता आपको ये? महाराष्ट्र, parts of Gujarat, Madhya Pradesh and Madhya Pradesh. और इसमें कौन सी जमीन, कौन सी मिट्टी है इधर? black soils. Black soil. फिर पढ़िए.
Deccan Plateau. Most Deccan Plateau rivers flow from west to east, emptying their water into the Bay of Bengal, indicating the slope of the region. The Godavari and its tributaries, the northern portion of the plateau. The Krishna and its tributaries, the central portion of the plateau. Krishna and its tributaries. उसके बाद the Krishna and its tributaries, the central portion of the plateau. उसके बाद The Deccan Plateau. The Deccan is rich in minerals. Primary minerals ores found in this region are mica, iron ore, gold, and other metals. gold and All other re- it is metals. very rich in minerals. Primary minerals ores are found in the region are mica, iron ore, gold, Mica. and other metals. Metals. All river basins are good for agriculture. The chief crop is cotton. However, sugarcane, rice, and other crops are also common. Are also common and they are water guzzling crops. शुगर केन को पानी बहुत ज्यादा होना और राइस को पानी बहुत ज्यादा होना और कॉटन को तो इट इज अ स्पेशलिटी. कॉटन क्या है? ब्लैक कॉटन सॉइल ही बोलते हैं उसको. ठीक है. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सिटीज? Important cities: Hyderabad, Bengaluru, Pune, Nagpur, Aurangabad, Mysore, Kolhapur, Satara, Hampi, Bijapur. तो कौन से है? अभी गॉन टू हैदराबाद में तुम बैठे हुए, बेंगलुरु गए? Have you gone to Bengaluru? No, sir, not yet. Not yet. Pune, Nagpur, Aurangabad, Mysore, Kolhapur, Satara, Hampi or Bijapur. Bijapur. So these are the important cities. Western Ghats. Western Ghats. The Western Ghats are the western edge of the Deccan Plateau. Western edge of the Deccan Plateau. They lie Western edge. parallel to They the lie western. next to the western coast. ये जो आपको दिख रहा है इधर, देखिए आप you have to remember this. ये क्या है? This is the Western Ghats. इधर जो है Western Ghats, इधर की जमीन पतली है, चौड़ी है. इधर की जमीन क्या है? नैरो है. इधर क्या है? ये ईस्टर्न घाट है. ईस्टर्न घाट की जमीन पतली है, चौड़ी है? चौड़ी है तो चौड़ी है. ये नैरो है. ठीक है, ये आपको याद रखना है. और क्या है? ये वेस्टर्न घाट्स है. इसका वेस्टर्न घाट कंटिन्यूएशन क्या है? Cardamom Hills. और यहाँ ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट मिलते हैं, कौन को क्या बोल रहे हैं आप? नीलगिरी हिल्स. ठीक है, ये याद होगा. शायद मैं स्टार्टिंग से या को पॉइंट बता रहा हूँ, शायद ये एग्जाम में आएंगे. ठीक है, आंख बंद करके जवाब दे सकते हैं आप. दे लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट. प्लीज रीड. The Western Ghat starts near the border of Gujarat and Maharashtra, south of the river Tapti, and runs through the state of Maharashtra, Goa, Karnataka, Tamil Nadu, and Kerala, ending at Kanyakumari at the southern tips of India. Total length approximately 1600 km, an average elevation 1200 meters. और इसकी हाइट, एवरेज हाइट क्या है? 1200. और टोटल पूरी लेंथ कितनी है? गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक. तो कितने स्टेट से पास हो रहा वेस्टर्न घाट्स? Maharashtra, Goa, Karnataka, Tamil Nadu, and Kerala. 5 states. Devil lies in the details. कितने स्टेट से पास हो रहा? And run through the state. Maharashtra, Goa, Karnataka, Tamil Nadu, and Kerala. What are we missing? कन्याकुमारी. कौन सी स्टेट मिस कर रहे? Ending at Kanyakumari. कौन सा? Devil lies in the details बोलते हैं. Near the border of गुजरात, माने गुजरात को टच कर रहा नहीं कर रहा? हाँ, गुजरात और महाराष्ट्र भी है. आप स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र से. पढ़ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला. 5. गुजरात को छोड़ दे रहे. गुजरात क्या कर रहा उधर? कितने स्टेट से पास हो रहा वेस्टर्न घाट? 6 states.
कौन से 8. Gujarat, Maharashtra, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu. तमिलनाडु एंड केरला। Kerala. तो कितने स्टेट्स है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरला एंड एंडिंग एट कन्याकुमारी, सदर्न टिप ऑफ इंडिया, द मेन ब्लॉक इंडिया। पढ़िए। The Western Ghats, they are continuous and higher than the Eastern Ghats. The height of the Western Ghats increases from north to south. So Tallest peak, Anyamudi, Anaimudi. to Anyamudi, Anaimudi 2,600, Anaimudi, 2,695 meter, tallest peak. 2695 मीटर। ऊपर के हिमालय से देखिए कितने थे? 8000 चिल्लर, 7000 चिल्लर। ये कितना चिल्लर है? Means 700, 2000. nearly 2600 चिल्लर। ऊपर के पिक्स कितने हैं हिमालय के? 7900 चिल्लर, 8100 चिल्लर। So they are continuous and higher. Western Ghats increases from north to south. गुजरात से लेके जब नीचे तक आते कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु तक, केरला तक, तो इसकी हाइट क्या होती? इसकी हाइट क्या होती? Continuous and higher. Western Ghats increases from north to south. Tallest peak कौन सी है? What is the tallest peak in Western Ghats? Anaimudi. मुड़ी कितना है? 2695 meters. 95 meters. 2695 meters. बढ़िया। The Western Ghats, these hills cover 160,000 kilometer square and forms the catchment area for a complex river system that drain almost 40% of India. The average elevation is around 1,200 meters, 3,900 feet. The area is one of the world's 10 hottest biodiversity hotspots and has over 5,000 species of flowering plants, 139 mammals. So कितना एरिया कवर करा Western Ghats? How much area is being covered by the Western Ghats? 160,000 square kilometers. 1,000 kilometers. और कितना ऑलमोस्ट कितना कौन सा रिवर सिस्टम कितना परसेंटेज ऑफ इंडिया ड्रेन होता है इधर? 40%. तो एवरेज एलिवेशन क्या है? 1200 meters. और ये वन ऑफ द इट इज इंक्लूडेड इन वन ऑफ द हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। आपको fauna as well as flora as well as fauna के different species मिल जाते हैं। Next. The Western Ghats are known by different local names: Maharashtra, Goa, and Karnataka. Sayagri, Karnataka near Mysore, Bilgiri, Rangana, Betta, Tamil Nadu, Nilagiri, Malai, Tamil Nadu and Kerala, Malai Hills and Cardamom Hills. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका में क्या known as सह्याद्री। कर्नाटका में क्या? कर्नाटका और नियर मैसूर में क्या बोलते हैं? बिलगिरी, रंगना, बेट्टा। तमिलनाडु में क्या बोलते हैं? नीलगिरी, मलाई। तमिलनाडु और केरला में क्या बोलते हैं? Malai Hills and Cardamom Hills. Malai Hills and Cardamom Hills. इसके बाद में The Eastern Ghats are the eastern edge of the Deccan Plateau. They lie parallel to the eastern coast. The Eastern Ghats are the eastern edge of the Deccan Plateau. The Deccan Plateau. They lie parallel to the eastern coast. Lie parallel to the eastern coast. उसके बाद The Eastern Ghats run from West Bengal state in the north through Orissa and Andhra Pradesh to Tamil Nadu in the south. An average elevation 600 meters. The Eastern Ghats are discontinuous and irregular and dissected by rivers Godavari, Mahanadi, Krishna, Kaveri, draining into the Bay of Bengal. Into the Bay of Bengal. Eastern Ghats run from the West Bengal. ऊपर से Western Ghats कहाँ से start होता? Western Ghats कहाँ से start होता?
गुजरात, बॉर्डर ऑफ गुजरात से ईस्टर्न घाट कहां से स्टार्ट हो रहा? वेस्ट बंगाल। आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. तो वेस्टर्न घाट कहां से स्टार्ट हो रहा? बॉर्डर ऑफ गुजरात से। ईस्टर्न घाट कहां से स्टार्ट हो रहा? गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट वेस्ट बंगाल। बंगाल से स्टार्ट हो रहा है और इसका एवरेज एलिवेशन कितना है? 600 मीटर। और उसका वेस्टर्न घाट का एवरेज एलिवेशन कितना है? 1200 1200। उसका एकदम डबल है। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट का डबल है एवरेज एलिवेशन। ईस्टर्न घाट आर discontinuous, irregular and dissected by rivers Godavari, Mahanadi, Krishna and Kaveri drain into the Bay of Bengal. The Eastern Ghats are older than the Western Ghats. Palkonda Hills, Javedi Hill, Shivaroy Hills are located to the southeast of the Eastern Ghats. Southeast of the Eastern Ghats. They are older than the Eastern Ghats are older than the Western Ghats. Please remember. लेकिन उसकी हाइट कम है, but Eastern Ghats are older than the Western Ghats. Western Ghats नए बने हुए हैं, Eastern Ghats बहुत पुराने हैं। और कौन से हिल्स है इसमें? पालकोंडा हिल्स, जवाड़ी हिल्स एंड शिवरॉय हिल्स। ठीक है, नल्लामला हिल्स, वेनुकोंडा हिल्स, पूरे आपको याद रहना पड़ता है। और ये क्या है? वेस्टर्न घाट में कौन से? शीशाचलम, नीलगिरी, दोसापेटा, अन्नामलाई एंड इसमें आपको नल्लामला हिल्स, वेनुकोंडा हिल्स, पालकोंडा हिल्स, नागरी हिल्स, जावाड़ी हिल्स, शिवरा हिल्स, पंचामलाई हिल्स, शिवमला हिल्स, पलानी हिल्स एंड गुरुशनाथ हिल्स, ये आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स, सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स, नीलगिरी, साउथ वेस्टर्न घाट्स। अगर आप इसमें देखें, starting in the West Bengal, then you have Odisha, then you have Andhra Pradesh, then you have Tamil Nadu and Kerala. इधर का ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट आके मिल रहा, क्लियर? दिस पॉइंट इज नोन एज नीलगिरी। Next, these are some of the differences between Western Ghats and Eastern Ghats. Continuous cross to the process. Discontinuous dissected through river. Average elevation 900 से 1600 मीटर। इसका एवरेज एलिवेशन 600 मीटर। ये अलग-अलग है, ठीक है? और क्या है? Western Ghats narrow strip, Eastern Ghats broad strip. Experience orographic rainfall. It receives rainfall in summer and winter. Soil is highly fertile. Rice, spices, rubber, fruits like coconuts, cashew nuts are grown here. The soil is not fertile. Western strip, rice, groundnut, tobacco, cotton and coconuts are grown here. Next, northeastern का extension देख लो, पढ़िए। Karbi Meghalaya Plateau is in foot an extension of the main Indian Peninsular Plateau and are originally two different plateaus, Karbi Anglong Plateau and Meghalaya Plateau. Karbi, Meghalaya Plateau, Karbi Anglong and Meghalaya Plateau इसमें this is the extension. Meghalaya Plateau में 3 hills है. What are the hills? Khasi, Jaintia, Garo. This is Garo. Garo, Khasi and Jaintia hills. Okay, this is the Meghalaya. Next, northeast extension of plateau. It is believed that due to the force exerted by the northeastwardly movement of the Indian plates at the time of the Himalayan origin, a huge fault was created between the Rajmahal Hills and the Karbi Meghalaya Plateau. Later, this depression was filled up by the depositional activity of numerous rivers. Depositional activity of numerous rivers. पानी आ रहा था, वो क्या है? They got the soil with it. It is believed that due to the force exerted by the north
westerly movement of the Indian plate. जैसा ऊपर उठ रहा है, at the time of Himalayas origin, a huge fault was created between Rajmahal and Karbi, Meghalaya Meghalaya Plateau. ठीक है? Plateau. Next, please read. Today, the Meghalaya and Karbi Anglong Plateau remains detached from the main peninsular block. This area receives maximum rainfall from the southwest monsoon. So these are the wettest regions. पानी कितना पड़ता है इधर? This Meghalaya and Karbi Anglong Plateau remains the detached from the main peninsular block. लेकिन receives maximum rainfall. ऊपर पड़े थे गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर से वो अलग हो गया. But they have the maximum rainfall. सबसे ज्यादा rainfall होता है. ठीक है? Next. Coastal plains. We'll finish it off. Then we'll put it. Western coastal plain and eastern coastal plain. Western coastal plain and eastern coastal plain. Please read. The western coastal plains, they extend from Gujarat in the north to the south in Kerala. It is a narrow plain whose width varies from 50 to 80 kilometers. The western coastal plains are smaller than the eastern coastal plains, and the region is divided into 4 parts: Gujarat coastal plains, Konkan coastal plains, Kannada coastal plain, and Malabar coastal plain. Eastern coastal plains. Eastern coastal the northern ये western cirques होगा. are ये eastern है. the northern north. cirques are the region between the Mahanadi River and the Krishna River. Is called northern Coromandel. circles. Second क्या है? Coromandel coast. The region between the Krishna River and the Kaveri River. Next Coromandel coast. ये क्या है? बाहर बैठ के छोला- पढ़ो बेटा. ये क्या है? छोला मंडला है. छोला मंडलम को क्या बना दिया लोग? कोरोमंडल. Coromandel. नेक्स्ट फिर से एक बार है. ये हिमालयस, ये थार डेजर्ट, ये क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स, ये ईस्टर्न घाट्स, ये क्या है? वेस्टर्न घाट्स. ये ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, अजीना इधर. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. अजीना वो फ्रेंच. नेक्स्ट प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ठीक है? सो वी हैव कंप्लीटेड आवर physical features of India. Clear? So this PDF I have already sent into the group. If you have, please resend it. How many you doesn't have, please resend in the group and share with your friends. Okay? We'll have the exam tomorrow in the evening. I'll upload the question paper in the evening. Is everything clear to you? Is everything clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir, yes. Please revise. I'll put an exam objective type in the evening tomorrow. I'll upload the question paper. You will get in your WhatsApp as well as in the group, and we'll have the exam in the evening. Okay, so that we'll end today's session. Please revise, revise, and revise. Okay. So let us. We will meet again on. We'll meet again on Monday. Okay. Sir, shall we take a printout of It's your OMR sheet? wish. Your wish. आपकी जैसा सहूलत रहे वैसा ले लो. ठीक है? Okay, sir. Clear. Love this. Enough is Allah said. Hafiz.